Dear students, we have discussed about soil degradation and soil conservation. Now we will discuss about soil conservation. What is soil conservation? Soil conservation is a methodology to maintain soil fertility and prevent soil erosion and improve the degraded soil. बेटा सोयल कंजर्वेशन क्या है? सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना इसमें इंक्लूड किया जाता है. सोयल के इरोजन को प्रिवेंट किया जाता है और डिग्रेडेड जो सोयल है उसको सोयल कंजर्वेशन में इंप्रूव किया जाता है. सो इट इज ए मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सोयल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट सोयल इरोजन and improve the degraded soil. It is known as soil conservation. Now we will discuss about some methods for soil conservation. There are some methods which can be applied, which can be used to soil conservation because soil conservation is very necessary in our country. Our country faces a serious challenge of soil degradation due to soil erosion. Is the one of the major cause. So we will discuss first of all afforestation. Afforestation means planting of trees at large scale. Planting of trees at a large scale in many ways. We can use agroforestry. For afforestation we can apply shelter belts. We can plant trees on the roadsides, on the sides of railway tracks, on the green belt in cities. So there are many ways by which we can attain the purpose of afforestation. Afforestation means planting more and more trees. So many ways which can be applied. Okay, this can prevent soil erosion because in arid region and in the region of heavy rainfall, trees are active agent of soil conservation. Trees are active agent of soil conservation. ये बेटा जो ट्रीज हैं हमारी सोयल को कंजर्व करते हैं, वो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. उनकी जब लीव्स और उनकी जो ट्विग्स, जो ब्रांचेज हैं, वो गिरने के बाद वो डिकम्पोज हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, तो वो सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं और उनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सोयल को बाउंड करती हैं और इरोजन से उसको रोकती हैं. सो एफोरेस्टेशन इज वेरी यूजफुल फॉर soil conservation. Now we will discuss about building dams and barriers. It is also an effective measure to conserve soil, to conserve fertile soil in our country. Building dams. By building dams, multi-purpose dams, we can store excessive water in the dams and we can use this stored water whenever it is required by us. We can use barriers, we can make ponds, wells in which we can store excessive water during rainy season and we can use it when it is requireable, when it is required. Okay, so building dams are also useful for soil conservation. They can prevent the situation of flooding
and flooding is responsible for soil erosion, sheet erosion and erosion by ravines or gullies. Okay, now we will discuss the next measure for soil conservation, that is check on overgrazing. To prevent soil degradation, we can use the method of check on overgrazing. Overgrazing is responsible for soil degradation because it is responsible for soil erosion by wind and water. We have discussed it earlier. So we can हम इस पे बेटा जो ओवरग्रेजिंग पर रोक लगाकर उस पर बैन लगाकर उस पर चेक लगा उसको कम करके हम इसको सोयल कंजर्वेशन को प्रोमोट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मेजर फॉर सोयल कंजर्वेशन, दैट इज चेंज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. We can use good practices for crop production. We can apply correct agricultural practices, like we can make terraces in the areas of hilly areas में हम टेरास फार्मिंग कर सकते हैं. टेरास फार्मिंग में जो इक्वल एलिवेशन वाली लैंड होती है उसमें छोटे छोटे बेड बनाए जाते हैं बेटा, और उनमें हम ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं. हाउएवर इट इज डन ऑन स्मॉल स्केल. फिर भी हम सोयल इरोजन को, सोयल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं और सोयल कंजर्वेशन को प्रोमोट कर सकते हैं. और वी शुड नॉट ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स. सो बिकॉज इट रिक्वायर a lot of water and which is a cause of soil degradation. So we can promote soil conservation by using correct agricultural practices. Now the next point is integrated land use. Integrated land use plannings also very helpful in soil conservation. In integrated land use planning, we make use of land in a way that is very beneficial for production of crops and do not degrade the environment. It is social friendly system of land use, integrated land use planning. We divide the land in different categories according to its fertility and use on the basis of its fertility for various purposes. जैसे कि जो ज्यादा फर्टाइल लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो कम फर्टाइल है बेटा उसको कम जो प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स हैं उनके लिए यूज हम कर सकते हैं. जो इनफर्टाइल लैंड है उनके लिए हमें इंडस्ट्री के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं. इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड लैंड यूज planning. It is also very helpful in soil conservation. So these were the some methods of soil conservation. I hope you have understood in a better way. Thank you beta. Have a nice day.